સુરત શહેર જાણે ડ્રગ્સનું એપી સેન્ટર બની ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। સમયાંતરે ડ્રગ્સ મળી આવ્યા હોવાના સમાચાર સામે આવતા રહેતા હોય છે, ત્યારે પોલીસે એમડી ડ્રગ્સ સાથે 2 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે। સુરત અઠવા લાઇન્સ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે। નાનપુરા કદમપલ્લી વિસ્તારમાંથી એમડી ડ્રગ્સ સાથે 2 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે। 100 ગ્રામ એમડી ડ્રગ્સ સાથે બીટુ કુમાર સુબોધ પાંડે અને પ્રશાંત જયરામ પ્રજાપતિની ધરપકડ કરી છે। આ બંને શખ્સોને પાંડેસરા વડોદના જીતેશ ઉર્ફે પંડિત જીતેન્દ્ર મિશ્રાએ ડ્રગ્સ સપ્લાય કર્યું હતું। સુરત પોલીસ દ્વારા છેલ્લા 2 વર્ષથી નો ડ્રગ્સ ઇન સિટીનો અભિયાન ચલાવી રહી છે। તે અંતર્ગત અઠવા લાઇન્સ પોલીસે બાતમીના આધારે નાનપુરા કદમપલ્લી વિસ્તારમાંથી 100 ગ્રામ એમડી ડ્રગ્સ, જેની આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમત ₹10,61,000 થાય છે, આ ડ્રગ્સ સાથે બીટુ કુમાર સુબોધ પાંડે અને પ્રશાંત જયરામ પ્રજાપતિની ધરપકડ કરી હતી। જોકે પકડાયેલ બંને આરોપી પાંડેસરાના વડોદ ગામમાં રહે છે। બંને આરોપીઓએ 100 ગ્રામ એમડી ડ્રગ્સ જીતેશ ઉર્ફે પંડિત, જેઓ પાંડેસરાના ગણેશનગરમાં રહે છે, આ એમડી ડ્રગ્સ પકડાએ બંને આરોપીઓને આપ્યું હતું અને જે કાદળ સાદલ નાળ પાસે કોઈ વ્યક્તિને આપવા માટે જણાવ્યું હતું। મહત્વનું છે કે હાલ બંને આરોપીઓ પહેલી વખત જ પોલીસના હાથે પકડાયા છે। આ આરોપીઓએ પહેલા કોઈ સ્થળે ડ્રગ્સ આપ્યું છે કે નહીં, કેટલા સમયથી આમ કરતા હતા, કોને કોને ડ્રગ્સ આપવામાં આવ્યું છે, તે हाल समग्र मामले आगनी तपास चाली रही है। जोन 4 की एलसीबी की टीम को बातमी मिली कि 2 आदमी प्रशांत जयराम प्रजापति और बिट्टू कुमार सुबोध पांडे, ये दोनों एक स्प्लेंडर लेके अठवा पुलिस स्टेशन की हद में गांधी स्मृति भवन के सामने कदम भवन के पास से निकलने वाले हैं और एक आदर्शा की नाल के पास में किसी को एमडी ड्रग की सप्लाई करने वाले हैं। तो इस पे पुलिस स्टेशन की टीम के साथ में वहाँ पे सभी स्टाफ को लगाया गया और इन दोनों को वहाँ पे डिटेन किया गया। बाद में सरकारी पंचों के सामने और एफएसएल की टीम बुलाई गई। इनकी जड़ती तपास में इनसे 100 ग्राम एमडी जो है वो बरामद हुआ, जिसकी पुष्टि एफएसएल ने वहीं पे ही टेस्ट करके की कि ये एमडी है। इसकी कुल कीमत 10,06,000 रुपये है। तो दोनों ये बिट्टू कुमार सुबोध पांडे, ये वडोद गांव पांडेसरा में रहता है और मूल रूप से औरंगाबाद बिहार का है। और दूसरा आरोपी प्रशांत जयराम प्रजापति, ये गणेश नगर पांडेसरा में रहता है और मूल रूप से ये वांदा यूपी का है। ये दोनों के पास से 100 ग्राम एमडी बरामद हुआ। तो दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया गया है और पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये जो ड्रग्स है वो जितेश उर्फे पंडित, ये गणेश नगर वडोद गांव में रहता है और मूल रूप से ये शहडोल मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उसके पास से ये ड्रग्स लिया था और ये कादरसा के नाल के पास में उस जितेश ने इनको बताया था कि एक आदमी आएगा, वो तुमसे ड्रग रिसीव कर लेगा, जब तुम वहाँ पहुँचो तो मुझे जान कर देना। तो ये लोग वहाँ जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने इनको पकड़ के और ये दोनों को अभी अरेस्ट किया गया और आगे की कार्यवाही चालू है। इनकी गुनाहित हिस्ट्री नहीं है दोनों की और अभी बाकी की पूछताछ चालू है कि ये पहले कहीं ड्रग्स इन्होंने सप्लाई किए, कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं, इसकी पूछताछ इनसे चालू है। हाँ, ये दोनों कोई काम नहीं करते हैं, छूटक मजदूरी करने वाले हैं। अभी तक पूछताछ चल रही है उनकी, सामने जो भी चीज़ें आएंगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो आपको शेयर करेंगे। इन्होंने, हाँ, इनका पहला गुनाह है।